See, the situation is that this question you need to understand from the society's point of view, keeping your emotions and other ideologies behind. All right? और सोसाइटी व्यू से जब हम पढ़ते हैं तो ये GS1 का पार्ट बन जाता है, जिसमें हमें इसको अंडरस्टैंड करना है कि what has been done till now, what it really is, and how can it be tackled, because anyway it is society's problem and we need to tackle it, right? So सबसे पहले we will understand कि इसके impacts क्या होते हैं. Okay, before that let us understand कि इसकी definition क्या है. Has it been defined as yet? Can anyone tell me इसकी definition अभी तक किसी ने दी है क्या? Students? Sir, I don't think so. इसकी कोई definition दी है. Sorry? No idea, sir. No idea, sir. Sir, no idea. So marital rape has not been defined in India as of yet, but in some Western countries such as France and others, it has been defined, and there's a specific law pertaining to it. So marital rape, it is not defined in India as of yet. So when you are going to introduce your answer, you can come up with this data. That NFHS 4 survey, roughly 5% of women reported that they have been the victims of marital rape. Okay? Yes, sir. Right. So then we need to understand what are the impacts of this problem. ये as it is अपने सोसाइटी के नोट्स में ऐड कर लेना और as it is ही आंसर लिखाना. So impacts को we will divide into multiple subheads. One is physical. Okay, so physically it can result into injuries, unwanted pregnancies, among other things. Okay. Then we have psychological issues. In psychological issues, please write that the mental health issues of women are impacted at a very large scale. So just write mental health issues. Okay. Then it is derogatory to the self-respect of women. You can just write as an example that not having your own control over your body, it leads to several mental health issues. Okay. Written? Yes, sir. Then we have social issues, that it leads to problems in social cohesion. जो हमारा social fabric है, जो women और men के बीच की interactions हैं in the society, it gets impacted very derogatively. Sir, would you please repeat it, sir? Sorry?
Would you please repeat it? सोशल इश्यूज में जो इंटरैक्शंस बिटवीन मेन एंड विमेन है, इट गेट्स इम्पैक्टेड डेरोगेटरी और डेरोगेटरी conversations between men and women. Written? Yes, sir. Then what are the challenges in punishing the marital rapes? The first challenge is defining it itself. Defining the marital rape is a very big challenge. How are you going to define it? Now, the second challenge is tracking it. The law and enforcement agencies, how are they going to track where the issue has, where the problem, where the crime was committed? Because then the jurisdiction issues come into play. And the third challenge is there is a potential of misuse. Since there can be no evidence of the crime, so there is always a potential of misuse. Sir, what was the second challenge? Sorry? Sir, second challenge क्या था? Second था tracking by the law and order administration. Okay. And the third is potential for misuse. Next. सर डेफिनेशन में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स नहीं जो आजकल चल रही है, मतलब आने वाली जो एक हफ्ते में चल रही थी, अभी कोई डेफिनेशन नहीं आई है। नहीं, जो उनके स्टेटमेंट्स हैं सर, उसको I don't believe that as a student you need to track the statements of Supreme Court, क्योंकि अगर आप ऐसे करने लग गए तो मतलब probably you won't have time for anything else. So you can always write that the Supreme Court's directions can be followed in your answer, but word to word I believe कोई काउंटर प्रोडक्टिव होगा, आपका कोई काम नहीं आएगा, वो चीज वो बहुत प्रॉब्लमैटिक होगा, इतनी चीजें उनके दिमाग में भरने की कोई जरूरत नहीं है आपको. Whenever by law it will be defined, then the pointers, the basic pointers you can understand, otherwise no point. Okay, so इसमें हमें डेवलपमेंट्स देखनी कि अभी तक हुआ क्या है इसमें. ठीक है, डेवलपमेंट्स या वे फॉरवर्ड, आप जो भी मर्जी बोलना चाहें. सो नंबर 1 इज जो जेएस वर्मा कमेटी हुई थी, post the very unfortunate निर्भया कांड, निर्भया केस. तो जो जेएस वर्मा कमेटी थी, it said that marital rapes should be criminalized. Okay, and number 2, Kerala High Court, it said that marital rapes can be a ground for divorce. ये दोनों चीजें लिख लीजिए और इसी से अगर आप एंड भी कर देंगे अपना आंसर तो इट विल बी वेरी गुड, एटलीस्ट बेटर देन मेनी पीपल. सो जब आप ये एक बार लिख लें तो मुझे बता देना. Sir, J.S. Verma committee to decriminalize the marital rape. Criminalize. अच्छा, criminalize, ठीक है. अभी ये क्रिमिनल नहीं है, ये चीज इसको क्रिमिनल करने को बोला था कि इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस घोषित किया जाए.
अंडरस्टूड? Yes, sir. राइट, इसको मिटा दिया जाए। Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, केरला हाई कोर्ट ने बोल दिया कि मैरिटल रेप्स कैन बी ग्राउंड फॉर डिवोर्स, तो उसको दिल्ली हाई कोर्ट या पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्यों माने? जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं उनकी ज्यूरिसडिक्शन तो केरला, लेट्स से केरला हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन तो सिर्फ केरला तक है, तो जो वो बोलेगा वो सिर्फ केरला पे अप्लाई होगा। तो ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट है जो कि इसको बोलता है कि यूपी लखनऊ हाई कोर्ट है, हमारा पटियाला हाउस वाला कोर्ट है, या लेट्स से हमारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, वो माने? ऐसा कौन सा प्रोविजन है? आई नैरो इट डाउन फॉर यू। ऐसा कौन सा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये चीजें मानी जाए? So the provision for justice, like justice should be same for everyone. सॉरी, Sir, the justice should be same for everyone. नहीं मैम, बट जो ज्यूरिसडिक्शन है, अब यूएस के कोर्ट ने कुछ बोल दिया तो ऐसा थोड़ी है कि यूएस के कोर्ट की बात है इंडियन सुप्रीम कोर्ट भी मानेगा। लेकिन केरला हाई कोर्ट ने कुछ बोला तो उसको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट मान सकता है, ऐसा Sir, कहाँ पे लिखा गया? So I think Kerala is part of the country. I like. It is a part of the country, but the High Court has jurisdiction only over Kerala. बाकी जो हाई कोर्ट्स हैं वो इसको मान सकते हैं, लेकिन ऐसा कहाँ लिखा गया है? बताऊं? Yes, sir. Yes, sir. Is this visible? Yes, sir. It's visible. Right. So आर्टिकल 261 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फुल फेथ एंड क्रेडिट देता है, यानी कुछ भी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है, गवर्नमेंट लेट्स से कोई कॉलेज है या हमारा हाई कोर्ट है या एनीथिंग है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे या उसकी जो रूलिंग्स होगी उसको पूरे एनीवेयर इन द कंट्री ऑफ इंडिया उसको फुल फेथ एंड क्रेडिट दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चंडीगढ़ में लाइसेंस बनवा के चला जाता है और मुंबई में ड्राइव करता है, मुंबई वाला जो पुलिस पर्सन है he cannot say कि ये तो चंडीगढ़ का लाइसेंस है और मुंबई में नहीं चलेगा, ठीक है? इट इज रिटन इन आर्टिकल 261 full faith and credit that public acts, records and judicial proceedings, full faith and credit shall be given throughout the territory of India to public acts, record and judicial proceedings of the union and of every state. Understood? Yes, sir. तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, Yes, sir. राइट। सो नेक्स्ट एक बार लिख लीजिए, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के वैसे करंट अफेयर्स बहुत कम आते हैं, वी हैव बीन फॉर्चुनेट कि इस बार ड्यू टू रिपब्लिक डे आ गया है। सो प्लीज राइट 1922 गुजरात ट्राइबल मैसेकर।